Hello dear friends, welcome to your channel SS Tuition Point. आज पढ़ो इस exercise 1.2 real numbers. At exercise मुझे आज दिन होइथ under root 5 question number 1 as under root 5 हसा छु irrational number. इधर पर दोयम question युस छु तात मुझे आज दिन होइथ कि हसा छु irrational number. तो त्रेयमिस question मुझे ति आज त्रे part तुम छु आज दिन होइथ हसा छु irrational numbers. रेशनल कुम गई इरेशनल नंबर कुम गई यह तुम पई तो फिर भी वन बह इरेशनल नंबर गई तुम नंबर यम नसा पी अपॉन क्यू यानी पी डिवाइड बाय क्यू फॉर्म मज हेको लिखित कहीं वेर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 तथ शक्ल मज युस नंबर कहीं तुम वन इरेशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इहज डिसमल एक्सपेंशन यह तुम बोजमुत तो मे तुह पर्नोमुत प्रीवियस वीडियो मज आज दिन अंडर रूट 5 हसा इरेशनल नंबर कित पार्ट करो प्रूव यम पार्ट त्रे कित पार्ट करो प्रूव मैथमेटिक्स मज मेथड तथ वन कंट्राडिक्शन मेथड सो कंट्राडिक्शन मेथड क्या गो कि इस चीज़ प्रूव आस कर नमो तमिक उल्ट तमिक अपोजिट तमिक बरक्स नमो सह चीज़ प्रूव करने खतर दिन हथ फॉर एग्जांपल अंडर रूट 5 हसा इरेशनल नंबर वनो कि ना यह ना इरेशनल कहीं बल्कि यह रेशनल यानी कि तमिक उल्ट यह प्रूव कर तमिक न्यू उल्ट न्यू कि अंडर रूट 5 हसा रेशनल नंबर तुम पी कि रेशनल नंबर गई तुम नंबर्स यम पी डिवाइड बाय क्यू शक्ल मज लिखित हेकोक वेर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 solution करो assume let us assume that let us suppose that under root 5 is a rational number हयत दिन तमिक बरक्स तमिक contrary is a rational number then under root 5 can be written as p upon q where p q belongs to integers and q is not equal to 0 यह कंट्राडिक्शन मेथड अत मज न्यू तमिक कंट्ररी यह प्रूव करन मगर ये सिंप्लीफाई करो ये ब्रो ब्रो पको सिंप्लीफाई करो सॉल्व करो ना यह एज्यूम कोर्मुत यह एज्यूम कोर तह गलत यह ना रेशनल कहीं बल्कि यह इरेशनल ये नेर कि यह रेशनल हेको पान वन तेल कि यह इरेशनल नंबर न्यू अंडर रूट 5 तेल कत बराबर पी डिवाइड बाय क्यू वेर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 अगर वन पी तो क्यू मानो कि पी तो क्यू हसा वन खोतन ज्यादा बे कॉमन फैक्टर सपोज पी एस तो क्यू एस कॉमन फैक्टर अदर देन 1 यानी कि तेल कंपोजिट नंबर अगर मानो कि पी तो क्यू हसा यह वन कि डायरेक्ट तक लिखित कि पी तो क्यू प्राइम नंबर तक लिखित तिथ पे लिखान या वन प्राइम कि वन कंपोजिट नंबर्स एज्यूम करो कंपोजिट नंबर्स यानी कि अदर देन 1 कॉमन फैक्टर प्राइम तो कंपोजिट तुम पई प्राइम नंबर गई तुम नंबर इन खाली 2 फैक्टर 1 तो पन पान कंपोजिट नंबर गई तुम इन 2 खुद ज्यादा फैक्टर मिसाल के तौर पर अगर 3 तो 5 यम हसा प्राइम नंबर्स क्या दोन कॉमन फैक्टर 1 योतन इथे पे अगर पी तो क्यू निमो मुजरा कि यम हसा कॉमन फैक्टर 1 योतन या अगर निमो मुजरा गोडनेथ यम हसा कंपोजिट नंबर अगर यम कंपोजिट नंबर तेल 1 खोतन बे कुछ कॉमन फैक्टर वन मानो कि कॉमन फैक्टर हसा गो आफ्टर डिवाइडिंग पी बाय क्यू कि अस द्राय नई 2 नंबर बह वन सह पे अस जन 4 डिवाइड बाय 6 यम कंपोजिट नंबर 2 इन कोर डिवाइड ये नेर 2 ये नेर 3 गो 4 बाय 6 मुजरा फॉर एग्जांपल पी अपॉन क्यू यानी कि कंपोजिट नंबर ये डिवाइड कोर तह द्राय बे 2 नंबर 2 डिवाइड बाय 3 सो 2 डिवाइड बाय 3 थो बराबर a डिवाइड बाय b if p and q have common factor other than 1 वन वर कॉमन कह फैक्टर
इस पर इधर ओस यमन दोन कॉमन फैक्टर 2 सो 2 तो 2 को कैंसिल आउट पर कन बचाओ 2 बन कन बचाओ असे 3 इधर पर p तो q ये इस यमन डिवाइड करो तद ऐसा राइज बेज if p and q have common factors other than 1 then after dividing ये इस डिवाइड करो then after dividing p by q suppose we get a and b where a and b are prime numbers यानी कि यम अगर यम कंपोजिट ये डिवाइड को तक नई 2 नंबर द्राय अड़ शॉर्टकट्स मज कुन जाए सोल्यूशन कि हेको डायरेक्ट वन कि p तो q हसा प्राइम नंबर यानी यमन अदर देन 1 कहीं तक कॉमन फैक्टर तेल हेको देन वी कैन राइट √5 इज इक्वल टू a divided by b यम कंपोजिट डिवाइड गो तक बे 2 नंबर a by b यानी कि 2/3 फॉर एग्जांपल 2/3 p by q 4/6 ये तुम कॉमन फैक्टर सो कैंसिल आउट तक 2/3 सो मुझे a by b इस b यह कर मल्टीप्लाई यह हेको कर 5b इज इक्वल टू a स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स हेको कर अगर वह करो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट या वी हैव यह गो स्क्वेयर रूट गई कैंसिल आउट यह गो 5b स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर यमिस स्क्वेयर गई स्क्वेयर तो रूट कैंसिल आउट तक बचा 5b स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर यह इंटू 5 यह हेको डिवाइड तक कर मतलब गो b स्क्वेयर इज इक्वल टू b a स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 5 फॉर्म मैथमेटिक्स मज कि अगर कह नंबर फॉर एग्जांपल जन नंबर 16 बनियामुत 4 स्क्वेयर सतन 4 स्क्वेयर बराबर 16 अगर ये 16 कह प्राइम नंबर करो डिवाइड अगर यह कुछ प्राइम नंबर सहित परफेक्टली डिवाइड गि फॉर एग्जांपल प्राइम नंबर कुछ परफेक्टली डिवाइड 2 प्राइम नंबर 16 गि 2 सहित परफेक्टली डिवाइड 2 1 2 8 यह फॉर्म वन यह 2 हसा कर यमिस परफेक्टली डिवाइड गो 4 डिवाइड बाय 2 सो द्राव 2 2 1 2 2 यह सो फॉर्म वन कि अगर हसा कह परफेक्ट स्क्वेयर नंबर 16 परफेक्ट स्क्वेयर नंबर यानी कि 2 2 4 16 25 36 64 यह परफेक्ट स्क्वेयर नंबर यह 16 बनियामुत 4 स्क्वेयर सतन गो 4 स्क्वेयरस अगर हसा 4 स्क्वेयर 16 अगर 16 गई डिवाइड 2 सतन तेल 2 सत कह बल्कि कुछ प्राइम नंबर सत अगर परफेक्ट डिवाइड गि गो 16 पे अके प्राइम नंबर सत परफेक्ट डिवाइड सह गो 2 सत परफेक्ट डिवाइड गि ये परफेक्ट डिवाइड गो 16 2 सतन तेल 2 कर यमिस परफेक्ट डिवाइड यमिस 4 सर 4 स्क्वेयर कि 4 करो डिवाइड 2 सत 2 गो परफेक्ट डिवाइड गोस इथे पे अमे फॉर्म यूज करो ये अगर a स्क्वेयर गसान डिवाइड 5 सतन तेल गई सर a डिवाइड 5 सतन इफ वह लिखो ये साइडस इफ a स्क्वेयर इज यह फॉर्म वन इफ a स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5 then तेल सोरे a divisible by 5 then a is also divisible by 5 अगर वह as डिवाइड गि b सतन as को डिवाइड b सतन implies that as को डिवाइड b सतन ये अकिस नंबर कर बिग नंबर डिवाइड तक मिलान ब्याक नंबर let that number be c let that number be c तेल क्या हेको कर a इज इक्वल टू 5 डिवाइड गि मल्टीप्लाई यह नेर 5c यह करो पुट इन फर्स्ट यह थो नाव फर्स्ट ये करो पुट a बराबर 5 √5b √5b गो पे जाए √5b इज इक्वल टू क्या √5b गो पे जाए इज इक्वल टू a बदल 5c b इज इक्वल टू 5c यह इंटू √5 यह डिवाइड √5 स्क्वेयरिंग करो बी बोथ साइड्स अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट या वी हैव b बन b स्क्वेयर इज इक्वल टू यथ गि स्क्वेयर बन 25 c गि स्क्वेयर रूट कैंसल तक बचा 5 5 1 जार 5 5 जार 25 गो b स्क्वेयर द्राव 5c स्क्वेयर यह इंटू 5 गि डिवाइड गो b स्क्वेयर डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू c स्क्वेयर
येम पे क्या रिजल्ट नयाव इस पे ये नसन अगर a स्क्वायर गई डिवाइड b 5 सतन तेल गि as ते डिवाइड 5 सतन इथे पे अगर b स्क्वायर गई डिवाइड 5 सतन तेल गि b सर b ते डिवाइड 5 सतन अगर कुन नंबरस बेकिस नंबर सतन डिवाइड मानो कि ये as गो डिवाइड 5 सत b गो डिवाइड 5 सतन तेल मतलब गो 5 तेल फैक्टर ये as 5 b 5 तेल तुम कॉमन फैक्टर अस वन कि a तो b हसा एज्यूम क्या आफ्टर डिवाइडिंग एज्यूम a एंड b वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स प्राइम नंबर क्या कॉमन फैक्टर अगर जो प्राइम नंबर तुम कॉमन फैक्टर वन योतन मगर यह a द्रा फैक्टर ये 5 क्या फैक्टर 5 तक डिवाइड गोस अस पी अगर कह नंबर कुन नंबर फैक्टर सह तमिस परफेक्ट डिवाइड करान as को डिवाइड कम 5 तेल 5 अमिक फैक्टर इथे पे bs को डिवाइड कम 5 तेल 5 अमिक फैक्टर गो as 5 फैक्टर bs 5 फैक्टर तेल as bs कॉमन फैक्टर 5 मगर अस वन कि as तो bs a एंड b आर प्राइम नंबर्स यानी कि इन हसा वन वर कॉमन फैक्टर कहें गो यस एज्यूम कर द्रा गलत कि a तो b हसा प्राइम नंबर ये नसन वन कि यह रेशनल नंबर कि यप a तो b हसा प्राइम √5 नी बराबर रेशनल रेशनल मज यह हसा बराबर इन दोन कुमन दोन यम गो नी कंपोजिट पे द्राए तुम आफ्टर डिवाइडिंग द्राए तुम प्राइम तो लास्टस प्राइम गो यह √5 नी रेशनल यानी कि p/q यानी कि प्राइम नंबर पे बने तुम a/b प्राइम नंबर मगर ये यूतान वात अगर a ग डिवाइड 5 सतन a स्क्वेयरस तेल गि as डिवाइड 5 सतन गो a फैक्टर इथे पे ये b फैक्टर b स्क्वेयर डिवाइड ग 5 सतन गो 5 तेल b फैक्टर तो अस ना ये कि as 5 फैक्टर bs 5 फैक्टर तम मतलब as bs 5 कॉमन फैक्टर इस एज्यूम कर कि as bs हसा प्राइम नंबर यम प्राइम नंबर इन हसा कॉमन फैक्टर कहें सह तेल गलत इट means that our assumption is it means that a and b have 5 as common factor which is contradictory to our assumption that √5 is rational. Hence we can say that √5 is irrational number. यह अस नियाव तथ द्राव तमिक उल्ट द्राव तम द्राव सही कहीं अस नियाव √5 रेशनल वो लास्टस ये नतीजस पे कि √5 ना रेशनल कहीं बल्कि यह इरेशनल नंबर तुंद समझन खतर करा बह बे रसा ये एड अस नियाव √5 लेट अस एज्यूम दैट √5 इज रेशनल √5 रेशनल √5 ये बराबर निमुत अगर अस यह न्यू उल्ट मगर यह बराबर न्यू सह उल्ट निमुत मतलब अस यह न्यूत रेशनल यानी यह रेशनल यह चाहे यह नेतन उल्ट कंट्रेरी या यह नेतन यह सेम थिंग अस न्यू √5 रेशनल सह यमिस बराबर सह रेशनल यह द्राव अस पे लास्टस p/q पे वत a/b तायत a/b अस वन यह निमुत ये नसन अस वोन कि यह रेशनल नंबर मगर लास्ट वत a/b नान उल्ट a/b नियाव नसन प्राइम नंबर मगर सह नान कि तुम हसा 5 ति कॉमन फैक्टर तम मतलब अगर a/b नान कंट्रेरी तम मतलब गो a/b ये बराबर सह √5 तेल √5 ति कंट्रेरी यह नियाव कि सह रेशनल नंबर तो सह रेशनल नंबर कहें ये a/b मज उल्ट कंट्रेरी अपोजिट तेल सह √5 मज √5 मज आव कि न्यूमु सह गलत रेशनल नंबर ना कह बल्कि यह हसा वन दोम पार्ट दिन हत 3 + 2 √5 इज इरेशनल यह दिमो हत बाय कंट्राडिक्शन मेथड इत पे गोडन्युक पार्ट कोर तिथे पे दिमो यह पार्ट हत कि यह हसा इरेशनल नंबर बाय कंट्राडिक्शन मेथड देखो लेट अस एज्यूम दैट एज्यूम क्या करो यह 3 + 2 √5 यह सा इरेशनल कह बल्कि यह हसा रेशनल यहाँ निमो रेशनल दिन इरेशनल निमो रेशनल
Therefore یُس یہِ 3 + 2√5 چھُ یہِ ہٮ۪کو أسۍ لیٖکھِتھ کَتھ شکلہِ منٛز P divided by Q where P and Q are co-prime numbers where P and Q are co-prime کٕم گٔیہِ تِم زٕ نمبر یِمن خٲلی وَنٕے یوت کامن فیکٹر چھُ آسان تِمن چھِ وَنان co-prime numbers تِم زٕ نمبر یِمن وَنٕے یوت کامن فیکٹر چھُ آسان یِمن چھُنہٕ وَنہٕ ورٲے بیٚیہِ کٕہٕنۍ کامن فیکٹر اَسہِ یعنی اَسہِ نیوٗ نہٕ واتان یِتھ پٲٹھۍ مُجرا کینٛہہ یِمن ہسا چھُ وَنہٕ یُس اَسہِ گۄڈٕنی آو کہِ P تہٕ Q یِمن ہسا چھُ وَنہٕ ورٲے تہِ پَتہٕ واتو أسۍ A یَس تہٕ B یَس پٮ۪ٹھ یعنی کہِ ڈایریکٹ وٲتۍ أسۍ وٕنکیٚنس کَتھ پٮ۪ٹھ مٲنتو تُہۍ أسۍ ییٚتے پٮ۪ٹھ یہِ ہسا نِمو أسۍ A تہٕ B گۄڈَے A تہٕ B کیازِ گۄڈٕ اگر أسۍ P تہٕ Q نِمو تَتہِ چھِ گژھان ڈِوایِڈ پَتہٕ چھِ گژھان کینسلیشن تَتہِ چھِ نیران پَتہٕ نٔے زٕ نمبر تِم چھِ نِوان A تہٕ B أسۍ نِمو ڈایریکٹ وٕنکیٚنس أسۍ ہٮ۪کو یہِ نِتھ کہِ لیٹ کہِ 3 + 2√5 چھُ A برابر A/B یَس یعنی P/Q شکلہِ منٛز اَسہِ چھُ پَیی کانٛہہ تہِ ریشنل نمبر ہٮ۪کو أسۍ کانٛہہ چکلہِ منٛز لیکھِتھ A/B شکلہِ منٛز where A and B are integers and B is not equal to 0 تہٕ ییٚتہِ چھِ أسۍ بیاکھ اکھ ایزمپشن تہِ کران where P and Q are co-prime numbers یعنی کہِ یِمن ہسا چھُنہٕ وَنہٕ ورٲے کامن فیکٹر کٕہٕنۍ تہِ تہٕ وٕنۍ کیاہ کرو أسۍ یَتھ یُس یہِ +3 چھُ یہِ ترون أسۍ یور یہِ بَنہِ -3 یہِ گوٚو اِزِکوَلٹس یِکُن چھُ یہِ LHS اِزِکوَلٹس یِکُن چھُ یہِ RHS LHS منٛز چھِ اَسہِ 2 ٹٔرمہٕ یہِ تھاوون أسۍ پنٕنہِ جایہِ یہِ +3 ترون أسۍ یور گوٚو 2√5 نیرِ برابر اَسہِ A/B یہِ چھُ +3 یہِ بَنہِ -3 √5 گوٚو پنٕنے جایہِ اَسہِ A/B تہِ گوٚو اَسہِ پنٕنے جایہِ -3 تہِ گوٚو اَسہِ پنٕنے جایہِ اَسہِ کُس روٗد لیکھنَے ییٚمہِ سٹیپُک یَتھ سٹیپَس منٛز سُہ گوٚو √5 یہِ سوری 2 چھُ ییٚتہِ آسان ملٹِپلاے اَسہِ چھُ پَیی ملٹِپلاے اگر اَسہِ کانٛہہ تہِ نمبر چھُ آسان سُہ ییٚلہِ تاران چھِ أسۍ بیٚکہِ اَندٕ ٹرانسپوز چھِ کران سُہ چھُ گژھان اَسہِ ڈِوایِڈ گوٚو یہِ چھُ 2 گژھِ ڈِوایِڈ یہِ گژھِ ییٚمِس A یَس تہِ ڈِوایِڈ یہِ گژھِ ییٚمِس 3 یَس تہِ ڈِوایِڈ A یَس چھُ گۄڈَے ڈِوایِڈ B بیٚیہِ تھاووس 2 گوٚو 2B یہِ 2 گژھِ ییٚمِس تہِ ڈِوایِڈ وۄنۍ اگر أسۍ یَتھ سٹیپَس پٮ۪ٹھ أسۍ نظر ترٛاوو اَسہِ کیٛاہ درٛاو اَسہِ درٛاو A/B A/2B سُہ چھُ ریشنل کیٛازِ یُس یَتھ شکلہِ منٛز آسہِ سُہ گوٚو ریشنل نمبر A/2B یعنی کہِ ریشنل نمبر 3/2 یہِ تہِ چھُ ریشنل نمبر ییٚلہِ أسۍ ریشنل نمبرس چھِ ماینس کران ریشنل نمبر تَتہِ یُس رِزلٹ چھُ آسان سُہ چھُ آسان ریشنل نمبرٕے اگر یہِ چھُ ریشنل یہِ چھُ ریشنل ریشنلس والو ریشنل تَتہِ نیرِ ریشنلٕے تَمیُک مطلب گوٚو یہِ چھُ سٲلِم نمبر چھُ یہِ چھُ اَسہِ ریشنل نمبر کیاہ چھُ اَسہِ یہِ چھُ ریشنل نمبر مگر گۄڈٕنِکِس پارٹس منٛز دیُت اَسہِ ہٲیِتھ کہِ √5 یُس چھُ سُہ ہسا چھُ اِریشنل نمبر تَمیُک مطلب گوٚو یہِ چھُنہٕ پاسِبٕل کینٛہہ کہِ اکھ اِریشنل نمبر آسہِ برابر أکِس ریشنل نمبرس ییٚمہِ اَندٕ چھُ یہِ ریشنل نمبر کیازِ چھُ ریشنل تِکیازِ یہِ چھُ P/Q شکلہِ منٛز یہِ چھُ P/Q شکلہِ منٛز ریشنلس ییٚلہِ والو ریشنل تَتہِ چھُ نیران ریشنلٕے یِہن چھِ ریشنل یِہن چھِ اِریشنل باے پارٹ فٔسٹ اِریشنل تہٕ ریشنل ہٮ۪کہِ نہٕ پاسِبٕل یِم چھِنہٕ ہٮ۪کن نہٕ اِکول ٲسِتھ کِہینۍ تَمیُک مطلب یُس اَسہِ ایجوٗم کریو سُہ ہسا چھُ غلط یہِ پارٹ چھُ ایز A and B are integers کیاہ چھِ یِمہٕ integer تَمیُک مطلب گوٚو یُس یہِ پارٹ چھُ therefore A/2B -3/2 is rational مگر یہِ √5 باے پارٹ فٔسٹ یہِ √5 ہسا چھُ اَسہِ اِریشنل اِریشنل ہٮ۪کہِ نہٕ ریشنلس برابر ٲسِتھ کینٛہہ اَسہِ یُس ایجوٗم اوس کوٚرمُت سُہ ہسا چھُ غلط therefore our assumption of taking 3 + 2√5 as rational is incorrect. So 3 + 2√5 is an irrational number. وۄنۍ چھُ اَسہِ کوسچن نمبر 3 اَتھ منٛز چھُ اَسہِ دیُن ہٲیِتھ 1/√2 دوٚیمِس پارٹس منٛز 7√5 ترٛیٚیمِس پارٹس منٛز 6 + √2 یِم 3 پارٹ تہِ چھِ اَسہِ ہٲیِتھ دِنۍ یِم ہسا چھِ اِریشنل نمبر یِمن تہِ کرو أسۍ یِہوے میتھڈ یوٗز کنٹراڈکشن میتھڈ أسۍ کرو لیٹ اس ایجوٗم دیٹ گۄڈٕنِکۍ پارٹ خٲطرٕ سولوٗشن لیٹ اس ایجوٗم أسۍ کرو ایجوٗم کیاہ that 1/√2 is a rational number یہِ ہسا چھُ اکھ rational number therefore 1/√2 can be written as
1 by root 2 can be written as in the form of a by b, where a and b are co-prime, यानी कि यमन छुन वन वराय कहीं ते common factor. Yet निमो taking reciprocal. Taking reciprocal on both sides. Taking reciprocal on both sides. Reciprocal छुतो पाई ये denominator का छोर numerator वैस बोन ताच मार reciprocal ये में आते तो ये में आते root 2 का छोर 1 वैस बोन सो 1 जो जरूरी लिखूं कि b का छोर a वैस बोन अगर a by b आश्न्यू rational तो b by a rational for example अगर 3 by 2 rational 2 by 3 ये rational तेले यहाँ चाहिए ये rational तेले अगर a by b rational तेले b by a rational मगर अश by root 2 ये irrational by part first तथ मज part first मज क्या कोर्मुत तथ मज root 5 ये अगर लिखित कि by part first अलबत्ता तुहन समझन खतर बना by part first तिकाज ये वुचन खतर ये कित पटन छु असे irrational नंबर तम खतर छ part first कोर्मुत असे तथ मज हयत दितमुत root 5 हसा छु अख irrational नंबर इथे पटन इस पर root 5 छ इथे पर root 2 त अगर ये irrational यहाँ छ rational मतलब इज इक्वल त छु पॉसिबल के अख irrational नंबर क्या है कि रेशनल नंबर बराबर आसित अच्छा तरह फिर यह एज्यूम कोर सो हसा गलत एज्यूम कोर्मुत तवे गो कंट्राडिक्शन ये कंट्राडिक्शन गई तवे पद ये मसला गो तवे पद अके हसा इरेशनल बे क्या रेशनल ये मसला क्या गो पद इरेशनल बराबर इरेशनल तिका यह एज्यूम कोर्मुत सो गलत एज a and b are integers so b by a is a rational number implies that our assumption of taking cos 1 by root 2 as a rational number is wrong. So 1 by under root 2 is an irrational. दोयम पार्ट 7 under root 5 दिन हयत यह हसा irrational number अत त करो यह मेथड यूज let us assume क्या that 7 under root 5 is a rational number युस ते आसि सु कत शक्ल मज लिखना a by b शक्ल मज या p by q शक्ल मज therefore 7 under root 5 can be written as a by b where a and b are co-prime numbers. Yus 7 छु multiply ये का तारुन दशने आंद ये गस divide root 5 को पन्ने जाए LHS मज a by b को पन्ने जाए RHS मज ये into 7 ये गस divide 7 अस ये क्या द्राव अस a by b छु रेशनल अगर वो a by 7 b निमो सु रेशनल अत पे कहीं ते फर्क ये रेशनल मगर root 5 by part first छु irrational योर रेशनल ये पॉसिबल कहीं as a and b are as a and b are integers so a by 7b is a rational number but under root 5 is an irrational number and a rational number cannot be equal to an irrational number. Under root 5 is an irrational number. Here root 5 is irrational and a by 7b is rational. Irrational number cannot be equal to any rational number.
So our assumption of taking under 7 root 5 is a as rational number is wrong. So our assumption of taking 7 root 5 as rational number is wrong, and we can say that 7 under root 5 is an irrational number. Your agar ye chu irrational, your chu ye rational. Irrational hekne rational barabar asit kihin. Ye masla kabar go pad, ye go tele pad yeli assume galat os kurmut. Contradiction se den go ye part. Stream part 6 plus root 2. Let us assume that is karo assume ke 6 plus under root 2 is a rational number. Therefore 6 plus under root 2 can be written as 6 plus under root 2 can be equal to a by b, where a and b are prime numbers. A to b chu prime numbers. Root 2 thaun is panne jaye is equal to a divided by b. You should plus 6 yet 6 you sign plus even minus 6. A by b achu rational. Minus 6 achu rational. A total 1 you bani rational. Ili rational swallow rational that ne rationally. Go yahan is chu RHS mudas chu. Is rational number. Root 2 chu irrational number. Irrational number hakne rational number barabar asit kihin. Tim matlab so assumption is chu soch galat of taking 6 plus root 2 as rational number. Therefore 6 plus under root 2 is an irrational number. As a and b are integers, therefore a by b minus 6 is a rational number. Therefore our assumption of taking contradiction further. Therefore our assumption of taking 6 plus under root 2 as rational is wrong. Hence 6 plus under root 2 is an irrational number.